तो वेलकम टू द क्लास। जीडी हम करेंगे अभी। तो 5 मिनट के लिए एक चीज बता देता हूँ कि जो भी बच्चे रिटन एंट्रीज की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आई विल इनकरेज देम टू प्रिपेयर फॉर सीडीएस एफकेट एग्जाम। अगर आप 24 साल के नीचे नीचे की एज ग्रुप में हो तो, अगर आप 24 साल के नीचे वाले एज ग्रुप में है तो आपको मैं बोलूंगा आप एफकेट भी दो, सीडीएस भी दो, तैयारी करो। तैयारी में तुम मेरे पास आके क्लास में ज्वाइन कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। अब वहां पे मेरा कहने का बच्चों इतना सा मकसद ये है, वाई आई वॉन्ट यू गाइज टू इनकरेज फॉर दिस इज बिकॉज कि डायरेक्ट एंट्रीज में आपका कंपटीशन बहुत होता है। सागर भी एग्री करेगा कि सागर तेरे साथ एनसीसी में जितने भी बच्चे हैं, तुझे भी पता होगा, यू माइट हैव टॉक टू योर सीनियर्स कि कितने बच्चों की रिपोर्टिंग होती है ना। और तुम तो टेक्निकल वाले हो तो तुम्हें तो खुद पता लग जाएगा, लाइव डेमो मिलेगा कि कितने ज्यादा बच्चे आएंगे वहां पे जब तुम स्क्रीनिंग में जाओगे। रिटेन एंट्रीज में फायदा ये है भाई कि जनता होती है कम, आपको अपना पोटेंशियल दिखाने का मौका मिल जाता है और आपके पास पूरा टैलेंट दिखाने को मौका मिलेगा, समय होगा आपके पास और प्रिपेयर करके जाओगे तो सेलेक्ट भी हो जाओगे। तो मैं बोलूंगा कि सीडीएस एफकेट दो, एफकेट बीटेक वाले बच्चे। आई वाज एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट माई सेल्फ, सो मैंने सारे रास्ते ओपन रखे थे। टेक्निकल एंट्री आई वाज नॉट लकी इनफ टू गिव दैट मेनी टेक्निकल एंट्रीज, बट आई वाज लकी इनफ टू क्लियर लॉट मेनी एग्जाम्स। सीडीएस एफकेट मेहनत करते थे अपन, तो हमने 5 सीडीएस 8 एफकेट निकाले और उसके बाद फिर 11 एसएसबी फेस किए रिटर्न के ही। ठीक है, तो एग्जाम दो, हेल्प लगे तो आ जाओ मेरे पास। ये हो गई एक चीज। अब आई हैव प्रोवाइडेड यू अ फ्री बैच, आई थिंक सबके पास है। इज देयर एनी वन ऑफ यू जिसके पास फ्री बैच का एक्सेस नहीं है, जिसमें नकुल की वीडियोस हैं? कोई ऐसा बच्चा है तो बता दो मुझे, ताकि मैं दे पाऊँ फिर उसको एक्सेस। है कोई? रक्षित है सबके पास है, आई गेस सबके पास ही एक्सेस है यार, है ना। और थोड़ा सा इसमें कम्युनिकेट किया करो, कम्युनिकेशन वाली क्लास है तो इसलिए कम्युनिकेशन पे ध्यान देंगे ज्यादा। चलो, ये हो गई एक चीज। नाउ इफ समवन इज कंफर्टेबल दे कैन टर्न ऑन द कैमरा बिकॉज सेशन विल बी गोइंग ऑन यूट्यूब। मैं पहले से बता दे रहा हूँ इसको, बाकी बच्चे बाद में देखते हैं। जिन बच्चों का एसएसबी है ना, वो देखते हैं ग्रुप डायनेमिक्स को सुधारने के लिए। अगर तुम कंफर्टेबल हो तो ठीक है, नहीं हो तो कोई बात नहीं भाई। इट इज टोटली अप टू यू, आई कैन नॉट फोर्स यू फॉर दैट। बट ग्रुप डिस्कशन में हम लोग ये कोशिश करते हैं कि जो तुम्हारा एक स्टेज फियर है, लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, माय वाइफ इज आल्सो कंडक्टिंग अ सेशन हाउ टू बी ए कॉन्फिडेंट स्पीकर। तुम लोगों ने देखा होगा, अगर आप ग्रुप पे हो तो एक थंबनेल आया होगा वीडियो का, वो बना रही है उसकी कंटेंट। तो काफी अच्छी सेशन वो रहेगी, देखना उसको। बिकॉज सी इज अ पब्लिक स्पीकर, सी इज एन एंकर एंड ऑल। और वो रिकमेंडेड भी है 2 बार नेवी टेक, नेवी ऑब्जर्वर में और एफकेट जीडीओसी में, तो वो उस लेवल पे बताएगी तुम्हें, तो समझ जाओगे तुम लोग एक बार में। यहाँ पे हम लोग कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन करें, ताकि जब हम एक्चुअल एसएसबी में बैठे हों, व्हेन वी आर इन द एसएसबी, वी डू नॉट फियर, हमें डर नहीं लगे। तो कोशिश करो बोलने की। हो सकता है तुम्हारा कॉन्फिडेंस वीक हो सकता है तुम बोल नहीं पा रहे, तुम कोशिश करते हो, मुंह में शब्द आ जाते हैं, निकल नहीं पाते। ऐसे उदय बोल रहा था मुझे लास्ट वाले सेशन में कि सर मैं तो भूल जाता हूँ, मेरे को मेरा कंटेंट खत्म हो जाता है। तो फिर मैंने इसको बोला कि भाई तू बाकियों का सुन के अपना जो है कंटेंट फ्रेम करके बोला कर, पर बोल, बिना 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 बोले नहीं होगा भाई। ठीक है यार, सिंपल सी बात है। यू गाइज आर गोइंग फॉर लीडरशिप रोल्स एंड आई वुड इनकरेज यू गाइज टू प्लीज वॉच आउट माई पॉडकास्ट। मेरा जो पॉडकास्ट है ना मेरे चैनल पे, टॉक विद द लीजेंड, जहाँ पे मैं ऑफिसर्स को इन्वाइट करता हूँ, उसमें यार स्पेशल फोर्सेज के सीईओज तक आ रखे हैं। तुम देखो उनको बोलने का तरीका देखो ना। अगर आप कल को लोगों को लीड करोगे एंड यू आर नॉट एबल टू स्पीक, हाउ विल यू लीड योर पीपल, हाउ विल यू लीड योर मैन? बात समझ में आ रही है? चाहे आप टेक्निकल एंट्री से हो, नॉन टेक से हो, बट बनोगे तो ऑफिसर ही। बात करना तो आना चाहिए ना, इन्फ्लुएंस करना तो आना चाहिए ना, पावर ऑफ एक्सप्रेशन तो होना चाहिए ना। तो उन चीजों को हम यहाँ पे इंप्रूव करते हैं। तो आज का जो जीडी है हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। 15 मिनट लगभग चलेगा, उसके बाद आई विल बी गिविंग यू गाइज इंडिविजुअल फीडबैक्स। उसके बाद अगर कुछ चीजें रह जाएंगी तो पर्सनली मेरे को व्हाट्सएप पे डीएम करके पूछ लेना आप लोग। मैंने लास्ट लेक्चर में बच्चों तुम्हें एक रिसोर्स शेयर किया था। हाउ मेनी ऑफ यू गाइज रिमेंबर कि मैंने कुछ बताया था कि तुम लोगों को अगर करंट अफेयर की तैयारी करनी है तो कहाँ से करनी है? कितने बच्चों को पता है? रेज योर हैंड्स एंड लेट मी नो। बताओ क्या बताया था मैंने, कोई ऑल बच्चा? इंडिया रेडियो सर, ऑल इंडिया रेडियो सर। ऑल इंडिया रेडियो, यस वेरी नाइस। और इसके अलावा क्या बताया था रक्षित? ऑल इंडिया रेडियो तो स्टडी बताया। आईक्यू। यस, स्टडी आईक्यू आईएएस का वीडियो आप देखा करो, ठीक है। उससे आपको काफी लोग देख लें जिन्होंने इंजीनियरिंग नहीं ठीक करी है। होती। ये हो गया एक चीज। इसके अलावा एएनआई का, एएनआई को फॉलो कर सकते हो, है ना। यू कैन फॉलो एएनआई एंड ऑल। तो ये सारी चीज आपकी हो गई। अब है ना, तो ये सारी कुछ चीजें हैं।
नाउ आज का जो जीडी का टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, वो मैं आपको बताता हूँ। मैं सबसे पहले कुछ गाइडलाइंस दे देता हूँ कि यार कोई भी बच्चा शांत नहीं रहेगा। प्लीज फॉलो द ग्रुप डायनेमिक्स, मेंटेन द डेकोरम ऑफ द लेक्चर एंड प्लीज स्पीक। जो भी दिल में आए बोलो, लॉजिकल बोलो, अच्छे से बोलो, पर बोलो यार, ठीक है ना, बोलना है, ठीक है। आज का जो जीडी है थोड़ा सा हिस्ट्री में घुसूंगा और नॉलेज भी चेक होगी तुम्हारी, ये हिस्ट्री से रिलेटेड है। 1857 का रिवोल्ट के बारे में आज का जीडी रहेगा। रिवोल्ट ऑफ 1857, सबने मंगल पांडे पिक्चर देखी होगी। मेनी ऑफ यू गाइज हैव सीन द मंगल पांडे मूवी। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, 1857 का रिवोल्ट, एंड देन हाउ इट वाज अ ब्लो, हाउ इट वाज अ ब्लो टू द ब्रिटिश एम्पायर एंड हाउ इट वाज एबल टू पेव द वे फॉर एन इंडिपेंडेंट इंडिया। यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ 1857 का, 1857 रिवोल्ट एंड हाउ इट वाज अ ब्लो टू ब्रिटिश एम्पायर and eventually paved the way for India's independence। ठीक है, यहाँ पे मैंने चैट में डाल दिया। तो इसके बारे में आज बेटा हम डिस्कस करने वाले हैं। मैं चाहूंगा कि सारे बच्चे पार्टिसिपेट करें, अपना मन अभी से फ्रेम करना चालू कर दो कंटेंट, ठीक है। और कैसे बोलोगे, क्या बोलोगे, वो तुम देखो, ठीक है। और करें स्टार्ट। Yes, sir. Yes, sir. Before I Yes, sir. start, any one of you want to tell me anything, ask me anything before I start? कोई बच्चा है, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो फटाफट से बोल के, नहीं तो फिर स्टार्ट करते हैं चीजें। डन है, चालू कर दे भाई, मैं चालू करूंगा, उसके बाद समवन विल पिकअप एंड देन लॉजिकली बोलना है और भसड़ मत मचाना, सबको मौका देना। और जो चीजें मैंने तुम्हें पुराने जीडीज में बताई हैं, ये जीडी जस्ट टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स, इसका कोई साइकोलॉजिकल मतलब नहीं है, बट ये तुम्हारे को बोलने का झाका दूर करता है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए मैं एक्टिविटी कराता हूँ रोज। सो आई विल बी स्टार्टिंग दिस। So friends, as topic of today's group discussion is 1857 revolt and how it was a blow to British Empire and eventually paved the way for India's independence. So I would be starting this by very famous quote of Jhansi की रानी, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, and she was a prominent figure in revolt of 1857. Revolt of 1857 we mainly known as the Sipahi Mutiny or First War of Independence. It was a very significant event in Indian history that has far-reaching implications for British Empire and eventually led the India towards independence. First thing was, we will be discussing about few pointers also. Okay, what was the cause of the rebellion, scope of the rebellion, and then British response, and then other things. Yeah, this revolt was started in Meerut in May 1857, and it soon spread it to some parts of Uttar Pradesh like Delhi, Lucknow, Kanpur, and other parts of northern and central India. This rebel is control of some territories and cities, challenging British authority. However, the British managed to suppress the revolt after a series of battles and by employing a combination of military force and divide and rule tactics. And the consequences of the rebellion were significant. The British government abolished the British East India Company and transferred the administration of India directly to the British Crown. That is the beginning of the British Raj. So it is led to the end of the Mughal Empire as a political power in India, with the last Mughal Emperor Bahadur Shah II being expelled to the now called Yagun, that is in the Myanmar. So the rebellion left a lasting impact on the Indian society and politics. And Okay. yeah, Speak, please speak. go on. Okay. As Shivam sir said, it's a Sipahi mutiny. So how that Sipahi mutiny takes place? In 1857 or some time before it, the new rifles came in British army. In that, the bullets of those rifle
should be teared from your teeth, and then put that bullet and gunpowder in that gun, and then they have to fire. But the cartridge of that bullet was made from the skin of cow and pigs. The cows are sacred to Indians, and pigs are sacred to Mohammedan people. So the sipais or soldiers of British Indian Army, they just refused to use those or tear that cartridges from their mouth. So this was the we can say initial phase of how those soldiers turn against the British regime. And after that, it takes a massive movement of independence in our history. We can Very also well add said. one. We also add one point that during this revolt, what happened? That British start using the sati system, and then what is called that window marriage. This also create the very big problems in our society. This will also create a bad environment. So this also creates the revolt of 1857. So by regular by, by regular in different activity which is not supportive of India welfare. By seeing this activity, India unable to see that British are doing very bad activities to India, that leads to the revolt of 1857. Yeah, in this Yeah, revolt, we can. women also played a very important role. Like some of the women, like Rani Lakshmi Bai of Jhansi, Begum Hazrat Mahal from Awadh, and the warrior queen Rani Avanti Bai, were among the prominent female leaders who led the troops into the battle. And the rebellion was sparkled by the introduction of new Enfield rifles also. But underlying causes, including discontent among the Indian sepoys regarding their pay, services conditions, and the erosion of their traditional privileges. So these are the some things that affects truly about the revolt. Yeah, Rakshat, very well Okay, said. starting. Jay and Abhishek, all very well said. But we have to go a little bit back. As we can see that after the revolt of 1857, the Sepoy Mutiny, earlier of 1857, the main focus of was not under our India was not under the rule of British. It was under the East India Company. And the major revolt was regarding a cartilage which was used in the gun, as one of our members just said. But earlier, before that, the guns which were used, they used to have one cartridge and they have a gunpowder which were separated, and they have to pour in a ratio and being used. So in that case, the maximum that happens was uh, the measured amount was not maintained or something like that, and the gun used to uh, fail during the implementation or using the gun. So that East India Company have made this new Enfield guns which used to have a cartridge which was made up of for some fat of pig and some amount of beef in it, which was restricted to Indian sentiment, which hurts the Indian sentiment both of the Muslims as well as the Hindus. One of them was Mangal Pandey, as we know, the leader, who came to know about this, and he from some resources it has also been confirmed that he has visited the factory and have confirmed it. He was the soldier who revolted against this and also came along with other specific leaders in the religion wise and make this a revolt. That's why they named it as a Sepoy Mutiny. That is, Sepoy Mutiny means soldiers revolt. Yeah, this is the You can biggest carry revolt. forward. This is the biggest revolt which was initiated by our Indian Army, the army, sorry, Indian personnel of British Army. The major cause of this spreadness of that revolt is because of that initiated by our army. And before that, there were many small conflicts which was initiated by our civilians. But so and but
Okay, I agree this with revolt. all the points. Yeah, The starting point, everyone said that it was revolt because of the gunpowder and everything. So it was the part of it. But the initial stage, it was like the sepoy who were working, like Indian sepoys, and compared to the British one, they were getting less paid. So this was the main reason they started uniting. And somehow, after some time, the main civilians, like civilians also came, like the whole India got united. And again the main reason was like, after that, the main reason was like they were hindering the traditional customs and the traditions of our like Indian. So this was also the main reason for letting the Indians unite, like Hindu, Muslims, or any religion. So this was the main reason that they revolted, and it leads to independence in our uh, uh, in our uh, country's independence. yeah, I agree Yeah, with We can as this. far also we can also one as add one point that 1857 revolt was not means what that India not very independent while using while the 1857 revolt, but during this revolt India have a huge impact of India. That earlier what happened that Queen Victoria is going to uh, control that direct administrative. But after that, there are some reports that India are also going to conduct their own administrative as a representative of India. This also have changed something. So we can say that not India want this, but India has gained many things as a revolt for this. yeah, as far as the global impact is concerned, the events of 1847 beyond Indian borders also, it sparkled the interest and concern in the British as well as in the other European countries. It also promoted the British government to raise its politics in India. And as far as the legacy of literature is concerned, the rebellion has inspired numerous literary work both in India as well as abroad. For example, we have some novels like The Seas of Krishnapur, that is written by J.G. I think Farewell, we are and the diverting from the topic, and the topic is around the revolt and how it was a blow to the British Empire and eventually paved the way for Indian imperial. Literary work is not at all needed. So there are few pointers that we would stick to. Causes of the rebellion. What were the causes? Eventually, it started with the Sipahi mutiny, and then eventually it grew to all the parts of the country. Scope of the rebellion actually began in Meerut in May 1857. Quickly spread to other northern and the central India. Lucknow, Delhi, Kanpur, Jhansi, all were occupied. I will be citing here one thing, that the British response. Initially, it took them off guard. The British faced significant challenges. They were thinking that we are invincible, no one can defeat us, and like that. So there was a significant amount of policy changes also. British were exposed to vulnerabilities in their rule, and they brought in various policies. And after that also, the company administration was basically finished and Crown administration took over through the Government of India Act 1858. National consciousness was also being rose, and Rani Lakshmi Bai, Nana Sahab, Bahadur Sahab too inspired future generation of freedom fighters. And then after these policy changes were done, eventually it paved the way for legacy and road to the independence. A new type of freedom fighters emerges, and eventually we at 1947 when we got the independence. So I think this was the timeline for that. So conclude karte hain. Let's conclude this GD now, guys. Sir, I want to add some points. Hmm. Okay, in our struggle or revolt of 1857 took far before our independence, which is in 1947. The main reason which caused the failure of we can say shortcomings of this revolt of 1857 is that the coordination between all the members of the revolt is not that much good. And second thing, that helps or that favors the British is that their communications lines and their logistics, means they have railway lines at that time of which help them to mobilize their troop as means very early before time, and also the telegraph line which help them to communicate properly among their troops. So I think these are the two factors which led to the failure of the revolt of 1857.
Yeah, Okay. before concluding, I have one point. That as Shivam sir said that our topic is 1857 revolt and how it was a blow to British Empire. So I think literature is something that motivates people from inside. As it is a revolt is going on, so there are many educated people in the country. If they try to read the literature and try to motivate the people from the inside, as Mahatma Gandhi did after some time during the civil disobedience movement also. So literature is something that plays a very vital role for the people who are educated and they can motivate through the legacy of the literature. Okay, let's hear from Uday as well. Uday No, I haven't been disagree. spoken. Some point I some point disagree with Jay. Like he said, literature. Yeah, literature plays an important role, but a big, a keen orator, like a cunning orator can, uh, implement it very, you know, in a very, clever manner. Like a good orator can divert the crowd from, you know, anything to anything. Like if he want, he can turn the crowd to fight the battle like a hero, or if he's not a good orator, he cannot. So I'm going to conclude all the points that in the revolt of 1857, the main reason is that East India as a growing trades as the growing trades and income to the East India Company, slowly gradually by getting more incomes and benefits, they are trying to establish their own company, try to get more incomes. For that, they have deployed some their measures, input just like some of the instruction which is not in the welfare for the country of India. They are on these steps only taken for the welfare of the Britishers only. So that's why these have created uh, huge negative points regarding to India. So that's why India started revolting this action that we are not going to follow. We are these things are against all the welfare for we this creates a huge difference. That's why this revolt happens. यार ठीक है, चलो लेट्स कंक्लूड, हो गया। कंक्लूजन में देखो, सिंपल सी बात है कि तुम लोग ना फैक्ट एंड फिगर्स नहीं बोलते कभी भी। तुम लोग जीडी में ना, मोस्टली जनता जो है, कुछ बच्चों ने अच्छा बोला, कुछ बच्चे तो खाता ही नहीं खोल पा रहे भाई। सागर बोल ही नहीं पा रहा। सागर क्या दिक्कत आ रही है यार? उदय इज नॉट ऑल्सो एबल टू स्पीक। उदय, क्या दिक्कत है? हेलो, हाँ बताओ। मैं कह रहा हूँ क्या प्रॉब्लम आ रही है, तू बोल ही नहीं पाता है यार। बोलने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कोई नहीं है तो बोलता क्यों नहीं है? बहुत मुश्किल है भाई, वहां पे लड़के टाइम, वहां पे मौका नहीं मिलेगा तुमको। जैसे जाओगे वैसे वापस आ जाओगे। वाई यू नॉट एबल टू स्पीक? हैव यू फिगर्ड इट आउट? कोशिश तो करो बोलने की। सागर सेम, बोला क्यों Yes, sir. नहीं? I hardly know about some point of this topic, but there are some few points which was in my mind, but they were already spoken by all. भाई और किसी के बाद एक चीज होती है जिसको बोलते हैं पैराफ्रेज करना। देयर इज अ वर्ड कॉल्ड पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग उसी बात को दूसरे तरीके से भी बोला जा सकता है, एक दो पॉइंट और ऐड करके। You can just add it a baseline कि okay, rightly said by the former speaker, rightly said by chess number that। और मेरे को सर मत बोला करो, मेरा नाम लेके बोल सकते हो। उस दौरान जब डिस्कशन हो रहा है उसके दौरान सर मत बोला करो, नाम लेके बोल दिया करो शिवम, ठीक है? तो या फिर राइटली सेड बाय फॉर्मर स्पीकर, लाइक राइटली सेड बाय चेस नंबर दैट, राइटली सेड बाय उदय, राइटली सेड बाय जय। आई वुड लाइक टू ऐड अ पॉइंट। और उसमें कुछ तो बोलो, एटलीस्ट पार्टिसिपेट तो करो यार। पार्टिसिपेशन ही नहीं करोगे तो फिर क्या दिक्कत, क्या क्या फायदा रहे? देयर इज नो बेनिफिट ऑफ डूइंग इट देन, ठीक है? सेकंड थिंग आई फिगर्ड आउट कि यू गाइस वर वेरी लैकिंग वेरी गुड अमाउंट ऑफ डेटा। तुम लोगों के पास डेटा नहीं था, तुम लोगों के पास फैक्टर्स नहीं थे। सिपाही म्यूटिनी बोला, किसी ने बोला कि वो चर्बी वाले कारतूस यूज करते थे, वो बात बिल्कुल सही थी, वो अच्छा पॉइंटर था। उसके अलावा तुम लोगों ने डेट्स के, किसी ने डेट नहीं मेंशन करी। अगर डेट नहीं पता थी तो तुम लोग गूगल भी मार सकते थे। अभी तो फिलहाल तो जीडी ऐसा था कि गूगल मार के भी बता सकते थे, है ना? क्योंकि मैं टीचर हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ सीडीएस के बैच में, तो ये तो मेरी चीजें, ये मेरे को टैप्स पे याद है ना? कि इवेंट रिवोल्ट स्टार्ट कैसे हुआ, रिवोल्ट के दौरान क्या हुआ, रिवोल्ट के बाद क्या हुआ, क्या पॉलिसी चेंजेस आए, ब्रिटिशर्स की कैसे हालत टाइट हो गई थी। तो ये मैंने एक फ्लो बनाया था उसका।
तो ये सारी चीजों को कवर किया करो. इवेंचुअली समवन हु स्पीक अथॉरिटेटिवली, समवन हु स्पीक विद डेटा विल बी मोर इम्प्रेसिव देन यू. गेटिंग माई पॉइंट, है ना. और सबको पता है कि 1857 का जो क्रांति अभियान था, स्वतंत्रता संग्राम था, उसने भाई धुआं धुआं कर दिया था. ब्रिटिशर्स की वॉट लगा दी थी, सच बताऊं तो. सबको पता है ना ये वाली बात, है ना. तो बी जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन इंडियन हिस्ट्री, पढ़ा करो चीजों को. जब नॉलेज होगी, डेटा होगा तो आएगा. एसएसबी इज नॉट लाइक तुम्हारा, जितने नॉलेजेबल होगे वो वहां पे दिख जाता है. वहां पे बोलने में दिख जाएगा, इंटरव्यू में दिख जाएगा. आप जब जीडी में पार्टिसिपेट करोगे आपका उसमें दिख जाएगा. ये कोई रिटन एग्जाम नहीं है कि तुम रट्टा मार लिए सेमेस्टर का और घोटा मार लिए पास हो गए. बैंक पीओ एसएससी नहीं है ये, ठीक है. एक लड़का था, वो मेडी जी से गेट की कोचिंग करने के बाद अब उसको एसएसबी की तैयारी कर रहा है, तो उसको भाई आते पता ही नहीं है, उसको गायब है उसका हिसाब किताब पूरा. तो ऐसे नहीं होती है तैयारी. एसएसबी इज अ पर्सनैलिटी बेस्ड सिलेक्शन सिस्टम. यू नीड टू फेक, आपको पता होना चाहिए कि ये मेरे फ्लॉज है, मेरे को काम करना पड़ेगा. ठीक है. जिन बच्चों ने बोला उन लोगों ने ठीक बोला, मतलब एटलीस्ट दे हैड द गट्स टू स्पीक. बट जो नहीं बोल पा रहा भाई, मैं उसको इनकरेज ये करूंगा कि बोलो. डेटा नहीं है, बाकी बच्चों का सुनो, बी अ गुड लिसनर. एंड व्हेन यू आर अ गुड लिसनर, तो आपका दिमाग इतना काबिल है कि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ पॉइंटर जरूर उसको याद होगा, वो बोलेगा. सोशल मीडिया से ध्यान हटा के थोड़े टाइम पे नॉलेज पे ध्यान लगाओ, है ना. चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन लो, इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ो, टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ो, आसपास क्या चल रहा है देश दुनिया में उसके बारे में पढ़ो. क्योंकि ग्रुप डिस्कशन स्टेज 2 में भी एक करंट अफेयर का आता है और एक जीटीओ देगा. तो जीटीओ देगा ऐसे टॉपिक पे जो सब बच्चे बोल पाए. अब उसके लिए चाहिए नॉलेज. जिस बच्चे को नहीं पता होगा वो ब्लैंक हो जाएगा. मान लो मेक इन इंडिया पे दे दिया मैंने, मेक इन इंडिया पे जीडी कराया, पुराने जीडी में देख लेना. जिसने मेक इन इंडिया के बारे में पढ़ा होगा, जो देख रहा है, न्यूज पढ़ रहा है, अखबार पढ़ता है, उसको पता है. जो नहीं पढ़ता उसका साफ हो जाएगा. सुमित, कोई गलत बात बोल रहा हूँ तो बता. नहीं सर, ठीक सही है. बात है. तो ये सारी चीजें हैं. ओवरऑल इट वाज अ गुड डिस्कशन. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड आई विल टेल यू टू प्लीज चेक आउट ओल्डर वीडियोस. मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा सबको ग्रुप पे. पुराने जो जीडी हुए ना बच्चों के, उनको देखो. उसमें भी मैंने बहुत सारी इनिशियल फेज में मैंने बहुत सारी चीज बताई है, और लास्ट में भी बहुत सारे पॉइंटर ऐसे बताता हूँ जो आपके ग्रुप डायनेमिक्स को अच्छा करेंगे, आपकी स्किल्स को होन करेंगे. ठीक है. पर्सनल रिव्यू, रक्षित वाज गुड. सागर बोला ही नहीं, उदय बोला ही नहीं, जय ने बोला अच्छा बोला, सुमित बोला ठीक बोला, सुमित. प्रशांत ने बोला, प्रशांत ने वजह से डिसएग्री करने के लिए बोल देता है ना, पसंद आई डिसएग्री, भाई उसको पोलाइटली भी बोला जा सकता है. नेगेटिव थोड़ा सा मत शो करने की कोशिश करो, है ना. जय वाज नाइस. अभिषेक सैनी का मैंने देख नहीं पाया कि बोला था अभिषेक की नहीं, बट बाकी सबने ठीक बोला. तो यही मैं बोलूंगा कि जो बच्चा एक बोल रहा था ना कि आई डिसएग्री, डिसएग्री को मत बोलो कि आई वुड लाइक टू बैक, आई बैक टू डिफर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ फॉर्मर स्पीकर, आई वुड लाइक टू एड अ पॉइंट. है ना. यार किसी की बेइज्जती करनी है, ठीक है ना, तो उसकी इज्जत से बेइज्जती करो. बात समझ रहे हो. अब ये हमेशा आखिरी के टाइम पे सवाल पूछता है. अब टाइम, समय समाप्त हो गया, उदय मेरे को मैसेज कर दियो तू. ठीक है. किसी की बेइज्जती अगर करनी है ना कभी, तो इज्जत से बेइज्जती करो, कि उसको बाद में जाके फील हो, तब ना पता लगे. तो ये तरीका है, पोलाइटली करना है. ग्रुप डायनेमिक्स फॉलो किया करो, पुराने जीडीज देखना. एंड ज्वाइन करने के लिए थैंक यू सो मच. बहुत सारा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट और भी आने वाला है, उसको भी देखना, हेल्प करेगा. किसी को भी रुद्र सर के पास जाने का मन करे, सिस्टमेटिकली तैयारी करनी है, तो मेरे को मैसेज कर देना, हाँ सर आई एम रेडी, मैं जान लगाने के लिए तैयार हूँ. वहां से फिर सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा. क्योंकि वहां पे अभी जितना मैं डांट रहा हूँ ना, उससे 10x डांट पड़ती है. ठीक है. चलो, कल मिलते हैं एक चीज बच्चों. पूछनी है. रीज्वाइन, देखो क्या रीज्वाइन कहते कर हैं, लो, रीज्वाइन 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 रीज्वाइन. टाइम जा रहा है, रीज्वाइन कर लो, सेम लिंक पे रीज्वाइन कर लो.